So very good evening, everyone. I'm Shilpa from shiksha.com, moderator for this session. Recently, we all have heard this news of 3 students from Delhi, Kanpur, Bombay IIT campuses bagged pre-placement offers worth 4 crore. It's every student's dream to work in a multinational company and grab such high salary packages. And that's why they want to give their best shot when it comes to campus placement. Today, we are going to discuss IIT placement process and trends. So if you have any questions related to our today's topic of discussion, then feel free to post either in the Q&A section or in the comment section, and I will try my level best to get it all answered by our today's expert. Believe me, this session is certainly be a milestone for you. So let's welcome our expert for this session, Santosh Meena. You are an IIT Delhi graduate and a YouTuber. I heartily welcome you, Santosh. Thank you, Shilpa. And we would like to begin this session by knowing more about you briefly. Over to you, Santosh. So, hello everyone. My name is Santosh, and I recently graduated from IIT Delhi. I was in chemical engineering, a dual degree program. So currently, I'm working as an analyst in a consulting firm, and I also have a YouTube channel where I share my experience regarding IIT Delhi. Yeah. Thank you for that brief introduction, Santosh. And so if I'll talk about the trend in IIT placement this year particularly, we have the high salary packages there, major recruiters visiting IITs. So, also many students are actually rejecting offered job. I was reading about it because of the entrepreneurship programs at some IITs. So we would like you to discuss how all of a sudden this trend wave is hitting us hard on social media. What's happening at IITs? So recently, we have observed that the number of startups coming in our Indian market are high compared to which in the last 5 years. So the students are trying to preferring to work on their own startups. Like they will get job. They know we will get job. That's not problem. But what if they work on something which can be more beneficial for the society, and eventually वहाँ से भी पैसा आना ही है उनको. So students are working on something which can be more beneficial for their personal growth compared to the 8 to 12 hours jobs. संतोष, आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो काफी बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो कि है why companies are preferring IITs over other tech colleges? Like IITs को क्या मतलब IITs में ऐसा क्या डिफरेंट है जो कि दूसरे कॉलेजेस के बच्चों में नहीं है? और इसमें एक और क्वेश्चन ये है, it just the IIT tag which matters in the placement? I think till some point it matters, but होता क्या है कि IIT have a culture जो उन्होंने इतने period of time में develop करा, which make it difference, which make it अलग सब लोगों से, सारे colleges से. It has a network जो उनके alumni का network है और उनके students का है, और हर किसी को पता है कि the students have already cleared JEE Advanced, so they hold a special place. मतलब चाहे वो acads था, but eventually the rigorous training have evolved them कि they can solve all questions. So companies try to उनको पता है कि we can teach these students anything. They will learn this easily, so they are hiring students on basis of that only, because the rigorous training, the alumni network, everything, or the culture at IIT have made things easy for a student to solve day-to-day life problems, and that's the only reason which makes IIT different. So next up, we have a question from Subro. If we complete MSc in chemistry at IITs, what are the benefits or the facilities for our future? Would you like to answer this, or we can skip it? Yeah, I can give a brief answer because I don't have much knowledge about MSc, because there are very less students or less facilities in IITs also. So there are people who do MSc from IIT, and I had few friends who were in the chemistry department. So eventually you're going in a research related part. There are jobs for MSc also, but there are less. These are less compared to the BTech or MTech programs. And you can eventually go for higher studies, or maybe PhD or something. You can become a professor. So these are one of the path in MSc, doing MSc from IIT.
I hope that answers your question. And next up, I want to ask you, Santosh, मतलब काफी टाइम से ये कॉमन क्वेश्चन रहा है, ओल्ड IITs versus new IITs. So, is there any difference in placement when it comes to old versus new IITs? It is like मतलब अगर आप देखो the old पहली बात तो old IITs established at places which are easy to reach. Delhi, Bombay, यहाँ पे सारी कंपनीज है, यहाँ पे कल्चर भी इजीली है. When it compared to new IITs कुछ काफी रिमोट लोकेशंस पे है, तो वहाँ पे companies don't prefer going because they have to spend their own convenience वगैरह. But and when it comes to old IITs, the ranking system has वही होता है ना कि higher rank people goes to older IITs. So eventually companies will try to go to those colleges जहाँ पे higher rank वाले अच्छे rank वाले students हो. So which technically make difference कि old IITs better क्यों है compared to new IITs. But slowly those new also IITs are also getting better opportunities, better educations because वहाँ पे भी सब कुछ same ही है. Eventually all over the culture वगैरह सब same है. But वही है कि old IITs have a better experience, better culture, better curriculum वगैरह in compared to new IITs because of their experience. Santosh, next up, a few students want to ask you a question, and it's related to IIT entrance exam. So Amarjeet and Srinojoy, they both want to ask you how to clear IIT entrance exam with good score. And if you have any tips, kindly share. And the second question is, just in a month, how we can prepare for this entrance exam. So what I can say is कि एक महीने की prep तो is nothing for IIT. Like you have to prepare for 2 years. मतलब सब लोग करते हैं. There are people who are preparing from class 8 to only. I have a few friends जो 8th class से prepare कर रहे थे. So general trend is like people go into coaching in 11th और वहाँ से start करते हैं. So you have to study in those 2 years. You have to forget about all the unnecessary thing. I didn't have phone like in 11th, 12th. So you have to focus only on your studies. You have to manage your time. You have to focus that you are the one who are working hard for this exam, not your friend, not your family, not your anyone is working hard. You are the one who is giving your time, who is investing yourself. So this is something which will which will motivate you and help you in when the conditions are not suitable or when you are not feeling motivated for the exam. So these 2 years are one of the most important part of your life. IIT आके सब बोलते हैं मजे है, बट लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने 2 साल वो मेहनत करी है, उसके बाद वो मजे है. और स्टिल IIT में भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि मजे है सिर्फ, वहाँ पे भी उतना ही पढ़ना पड़ता है. एंड फॉर द 1 month प्रेप आई कैन से कि 1 महीने में तो नहीं होगा. यू हैव टू प्रिपेयर पहले से. 1 महीने में आई कैन टेल यू कि रिविजन कैसे करना है. द रिविजन इज यू हैव टू कैटेगराइज तुम्हें कौन से पार्ट्स थोड़े लेस आते हैं, यू आर वेरी जिनमें तुम्हारा वीक है, और जो तुम्हारे टफ स्ट्रॉन्ग है उनको अलग कर लो. उनको कम टाइम दो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है. जो वीक है उनको रिवाइज करते रहो डेली. जैसे केमिस्ट्री में पी ब्लॉक वगैरह होता है, उन सबको डेली रिवाइज करो. इक्वेशंस को डेली रिवाइज करो. एक लास्ट मंथ में यही हो सकता है. और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो. दैट्स ऑल यू कैन डू इन द लास्ट 1 month. ऐसा नहीं है कि यू कैन क्रैक. अब करने वाले कर सकते हैं, ठीक है, बट आई थिंक दैट्स प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा टफ है. इट्स बेटर टू प्रिपेयर पहले से. 1 month रिविजन के लिए रखते हैं लोग. वैसे संतोष ने हमें काफी ब्रीफली बहुत ही चुनिंदा टिप्स हमें दिए हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हो जानने में, रिटर्न उनको गाइड चाहिए, तो मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में. आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं और वहां पर सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएगी. एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट संतोष. कुछ Q&A बॉक्स में हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, सो लेट्स टेक अप दोस. वन क्वेश्चन इज व्हाई मेनी कंपनी चूज हाई रैंक स्टूडेंट्स. maybe the problem solving skills थोड़ी different होती है compared to the low rank, but IITs में इतना difference नहीं होता है. Like when you are, there can be difference in your branch, but when you are from chemical, तो उनके लिए all chemical students are same. Of course your CGPA will be a point of differentiating you from other student, but rank वहाँ पे matter नहीं करती है. चाहे आप कोई भी rank से हो, कुछ भी हो, but when you are from chemical IIT Delhi, उनके लिए वो सब same है. It's just the main difference होगा आपका CGPA हो सकता है या फिर the things you did in your college. तो rank college से पहले तक matter करती है, college में आके matter नहीं करती है इतना. And हाँ.
So चाहे आप the major difference होगा कि आप CS हो या chemicals हो, तो there are chances कि companies prefer CS student, there are chances कि chemical student, तो वहां पे difference आएगा. But inside a specific branch major difference नहीं आता है, कोई difference नहीं आता rank से. लोग rank लिखते भी नहीं है CV में. Santosh, next up we have a question from Rahul. Which college have the higher placement? Has the higher placement? So हाँ, IITs में सब में almost same ही होता है, because the one company which goes to IIT Delhi that will also go to Bombay, Kanpur, Kharagpur, because they know यहाँ पे सब same है. Old IITs का थोड़ा सा benefit होता है. हाँ, there are chances कि कुछ companies दिल्ली जाती है क्योंकि दिल्ली very easily accessible है उन लोगों के लिए, तो वो चाहे कानपुर खड़गपुर ना जाए. But when it comes to day 1, day 2, day 3 companies, वो almost सारे IITs में same होती है. और वहाँ पे सब IIT से प्रेफर करते हैं ताकि उनका डाइवर्सिटी हो उनके पास कलीग एम्प्लॉयज के अंदर. ऐसा नहीं है कि उसे फेक कॉलेज से उठा लेंगे. वो सबसे डे 3 तक की कंपनीज तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में जाती है जहाँ से हायर करने के लिए. Santosh, next up we have a question not related to placement. Again, it's related to BSc in chemistry. And Subro is saying that I will be joining IIT in chemistry department through JAM exam. Is it good or bad? So Subro, I have very less knowledge about MSc and BSc part of the IITs because I'm a BTech student और मेरे आसपास में mostly सारे BTech और MTech students थे. I hardly know someone जिसने ये करा है, so I can't share much knowledge about that. You can reach out to people on LinkedIn or Google about it. तो ज़्यादा better होगा. Okay, thank you for answering that, Santosh. And next, we have a question from Kajal Upadhyay. She's asking about, tell us more about PPO and summer internship opportunities and tips to crack IIT campus placement. Okay, so basically, when it comes to placements, तो वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे final year में शुरू होंगे. वो थर्ड ईयर में ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि थर्ड ईयर में इट्स अ टाइम फॉर इंटर्नशिप और इंटर्नशिप से लोगों को मिलता है पीपीओ दैट इज टेक्निकली प्लेसमेंट ऑफर. सो थर्ड ईयर में आईआईटीज के अंदर फर्स्ट सेम थर्ड ईयर देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड प्लेस इंटर्नशिप प्रोसेस जहाँ पे जो कंपनीज प्लेसमेंट्स में आती है वो आ सकती है या फिर नई कंपनीज भी होती है. वो इंटर्न के लिए आती है, ऑन कैंपस होता है पूरा का पूरा एंड यू द प्रोसेस इज सिमिलर टू प्लेसमेंट्स ओनली. उसमें सेम टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है एंड देन यू गेट इंटर्न्स internship depending upon your test interviews वगैरह. Then after doing the 2-month internship in specific company, if they find that you are very good, you can be a good employee for them in future. So वो डायरेक्ट तुम्हें पीपीओ देते हैं which is pre placement offer कि we don't want you to sit on placement, you can we just giving you offer letter कि हाँ आप अगले साल आके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको प्लेसमेंट आने की जरूरत नहीं है. इसको पीपीओ बोलते हैं. समर इंटर्नशिप्स आर मस्ट फॉर अ स्टूडेंट बिकॉज दे गिव देम अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा है, चाहे वो रिसर्च रिलेटेड हो या फिर कोर हो और कॉर्पोरेट हो, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है. दैट will help them in building their resume कि they have worked on a similar positions earlier and सेम चीज जब वो कंपनी कोई प्लेसमेंट पाएगी तो दे विल हैव टू शो लाइक आई हैव वर्कड एट स्पेसिफिक कंपनी इन दिस प्रोफाइल एंड आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 2 months which is going to help them a lot. So you have a upper hand from the student जिन्होंने उस फील्ड में इंटर्नशिप नहीं करी है. तो समर इंटर्नशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन सिटिंग इन द प्लेसमेंट. They help you in gaining knowledge, they help you in gaining experience, and they help you in gaining a upper hand from the students who are not doing internships. So ये प्रोसेस होता है इंटर्नशिप का. देन इट कम्स टू प्लेसमेंट. सो प्लेसमेंट प्रोसेस 4 महीने का चलता है प्रॉपर. दो इंटरव्यू सिर्फ दिसंबर 1 से शुरू होते हैं बट प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाता है जिसे बोलते हैं इट स्टार्ट विद बिल्डिंग योर रेज्यूमे. यू गेट अ स्पेसिफिक विंडो जहाँ पे यू हैव टू बिल्ड योर रेज्यूमे एंड इट गेट वेरीफाइड फ्रॉम द आईआईटी कि यू हैव डन दिस थिंग. यू कांट फिल एनीथिंग कि भाई मैंने ये करा है, इंटर्नशिप करी है. नो, यू हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ एवरीथिंग. सो वो रेज्यूमे में वेरीफाई होता है. सो दैट्स द लाइक कि ये बंदा लेजिट है. सो यू कांट फेक एनीथिंग देयर. So this is the process which start from building your resume. Then there are companies जो अपना PPTs लेके आती है, presentation शो करती है कि what they are offering and what is their package and what is going to be the process. So this goes around for 2 to 2.5 months, and during this period there are tests for
tests by these tests are conducted by companies only. So these are kind of filtering process. वो filter करते हैं कि उनको किसको चाहिए नहीं चाहिए depending upon your test, your resume. कुछ companies hard CGPA deadline रखती है, like that the quant companies keep like उनको पता है कि वो CS MNC से लेगी, तो they don't allow other branches. इसके अलावा there are companies SG, they keep a hard deadline of 7 CGPA, 8 CGPA. It can be anything depending upon the company. So this is the way where they filter out the students from IIT only, and then वो अपने shortlist करते हैं interview के लिए. So this is the process of internship and placement at IIT. और सारे interviews एक साथ होते हैं दिसंबर में. 1st December is date 1 for interviews. And if you get placed in on day 1, you can't sit on day 2. So वो आपको वैसा रहता है. Okay. So I will just quickly try to summarize what you said, Santosh. Please guide me if I'm just saying anything wrong. Yeah. So the process involves building of resume, screening of resume, and company presentation in the process, where the company comes and give presentation and talks about the salary they will be offering and the job roles and responsibilities. Then the companies conduct tests. It's a kind of filtering process, which you said. And then we have the final interview in the month of December, right? Yeah. Yes, sir. So how did you do the preparation for each stages? So I did an internship in a startup, which was because I was preparing for product manager, but eventually I ended up being an analyst. So वो तो होता है. But so you have to at least decide कि तुम्हें कौन सी प्रोफाइल में जाना है, which depends upon कि तुमने कॉलेज में 4 साल क्या किया है. 4 साल या तुम्हारा बीटेक है तो 3 साल तुमने क्या किया है. So वो डिसाइड करता है कि तुम्हें कौन सी प्रोफाइल में जाना है. आई वाज श्योर कि मुझे एसजी में नहीं जाना है, मुझे कोडिंग नहीं करनी है. So आई वाज श्योर दैट अबाउट दैट. So you have to figure out ki for which profile you are preparing. Then you have to ask your seniors, your batchmates, कि what is the things you have to prepare for interview. अगर कोई product management की company आती है तो उनको क्या चाहिए होता है. This information is available on internet also. और इसके अलावा you can ask your seniors या फिर जो employees उस company में काम कर रहे हैं तुम्हारे senior हो. So this is where the alumni network help, because if कोई random एक company आई, you don't know कि वहाँ क्या पूछने वाले हैं, क्या टेस्ट होगा, क्या प्रोसीजर होगा. यू कैन आस्क योर सीनियर, और देयर आर हाई चांसेस कि कोई भी IIT दिल्ली का एक सीनियर वहां पे होगा. सो मैंने स्टार्ट करा था एनालिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए. एंड यू हैव टू फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट यू हैव टू प्रिपेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट केस. जो लोग रूल्स की प्रेप कर रहे हैं उनको पता होगा कि उन्हें क्या करना होता है. एंड देन उसके बाद होता है आपको अपना एप्टीट्यूड थोड़ा बेटर करना पड़ता है. इवेंचुअली मोस्टली कंपनीज एप्टीट्यूड पूछती है. यू हैव टू प्रिपेयर योर मैथ्स, प्रोबेबिलिटी. इसके अलावा पजल सॉल्व करना. दे जज यू ऑन योर क्वांट पार्ट आल्सो, दे जज यू ऑन एप्टीट्यूड पार्ट. एंड इंग्लिश वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं करती है, अब इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करती है. बट हाँ, इंटरव्यूज इंग्लिश में ही होते हैं. देयर कैन बी सेमी लाइक हिंदी यूज हो सकती है, बट अगर द इंटरव्यूअर इज प्रॉपर्ली यूजिंग इंग्लिश ओनली, यू कांट गिव आंसर इन हिंदी. तो ये दिस विल इवेंचुअली तुम्हारा वो व्हाट केस क्या मतलब तुम्हारा खराब होगा उस व्यू. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड मैंने सारे केस प्रेप करा उनका. एंड देन आई वेंट थ्रू लॉट. मैंने बहुत सारी कंपनीज के टेस्ट दिए, बट इवेंचुअली आई गॉट selected in analyst positions जहाँ पे we have to solve for data related things. Yes. Yes, Santosh. So we have received a set of questions for Okay. you. Rekha Pandey, she wants to ask you, can candidates sit and attend other company campus interviews even if he or she has already selected in previous company? No, you can't, because I told you ना कि interviews December 1 से शुरू होते हैं. We don't have interview during the test period. I have seen कि other दूसरे colleges में I have few friends जहाँ पे टेस्ट और प्लेसमेंट साथ में होता है for these 4 months. But in IITs December 1 को इंटरव्यू शुरू होते हैं तो December 15 तक चलते हैं. So अगर if you get placed on December 1, you can't sit on December 2. You are over with the process. तो अगर December 1 पे हो गया तो December 2 पे नहीं जा सकते. एक कम अगर हाँ, there are chances कि on December 1 you have 5 interviews, you get placed in 4 companies. तो वहां पे यू कैन डिसाइड कि फॉर विच कंपनी यू वांट टू गो. वो भी तुमसे एक दिन पहले पूछ लेंगे कि व्हाट इज योर प्रेफरेंस इन दोस 5 कंपनीज जिनका तुम्हारा इंटरव्यू है. सो आफ्टर सो यू डोंट हैव टू
get chance, you don't have a chance to decide after giving your interview. पहले पता होता है हमको कि संतोष के ये top 5 कंपनीज है, आज इंटरव्यू है और इनमें इसकी प्रेफरेंस ये ऑर्डर है, तो वो अपने आप तुम्हें ऑफर मिल जाएगा, तुम्हें चाहे 4 कंपनी में जॉब क्यों ना लगी हो, पर दिसंबर 2 को तुम नहीं बैठ सकते. Santosh, next up we have a question. So this question is again, for which company you have been selected and what's your package, roles and responsibility in current organization. I think Rekha for sure Santosh can explain it, but I don't know how it is going to help you. So rather Santosh, I would just simply rephrase the question Rekha wants to ask you. You can tell us about the top recruiters which visit IITs and the salary package range and the job profiles they're just looking for. So I think that will help all of us rather just knowing about you, what you are up to. So there are multiple rules. कुछ start करते हैं SD से जो common है, software development वाला. उसके बाद आता है quant role, जिस trading companies के लिए या फिर quant profiles होती है. उसके बाद analyst, which is very common for everyone. Product management companies have started coming to IITs, जो पहले MBA वगैरह hire करते थे, but वो recently last 5 साल में IITs में आना शुरू हो गए हैं. उसके अलावा कंसल्टिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये भी पहले मतलब देयर आर वर्क, मतलब मेजर हायर अपना एमबीए करते हैं, बट उन्होंने आईआईटी से हायर करना शुरू कर दिया काफी लंबे टाइम से, एंड अभी भी वही चल रहा है. सो इन दिल्ली यू विल गेट एवरी टॉप कंसल्टिंग फर्म, जो भी बीसीजी, मैकेंसी, बेन हो गई या फिर कर्नी हो गई, एली के, आईक्यूविया, सारी बड़ी कंसल्टिंग फर्म आईआईटी आती है. इसके अलावा फॉर क्वांट प्रोफाइल बहुत सारी कंपनीज है. मतलब इफ आई ऐसे लिस्ट डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि द नंबर ऑफ कंपनीज विच कम्स फॉर लाइक जो बहुत रेगुलरली आ रही है आईआईटीज में, जो टॉप फर्म्स है इंडिया की, वो ऑलमोस्ट सब आ जाती है हायर करने के लिए. लाइक यू कैन सी ग्रेविटॉन, जो ट्रेडिंग फर्म है विच गिव्स द करोड़ पैकेजेस, ग्रेविटॉन है, वो आती है. तो प्रोडक्ट मैनेजर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सब आता है. तो ऐसे लिस्ट डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है कि. और प्लेसमेंट रेंज, तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब 10 लाख से करोड़. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुमने कॉलेज में क्या किया एंड व्हाट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो ऐसे एवरेज पैकेज इज जस्ट रिवॉल्व अराउंड समथिंग, डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल. अब एसडी में तो वही 20-25-30 लाख इजीली में हो जाता है. इजीली इस बार थोड़ा टफ था, बट हाँ 25 लाख. वही क्वांट रोल जिसमें ज्यादा मिलता है पैसा, और या फिर आपका एचएफटीज होती है, उनमें पैसा करोड़ का भी होता है. तो और एनालिस्ट है तो वही 15 to 20 lakhs का. कंसल्टिंग में 15 to 20 lakhs होता है. तो ऐसे सब प्रोफाइल वाइज डिफरेंट रहता है पैकेज. I hope Rekha that will help you more better than just asking about Santosh. And next up we have a question. Generally, many people are moving to computer science and IT technology, even though they are from production, mechanical, civil branch. What is your advice for your junior? So I can say कि IT में बहुत ज्यादा हो गया ऑलरेडी. लाइक वी हैव सीन लॉट ऑफ कंपनीज लेइंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अभी रिसेंट कुछ पास्ट 2-3 मंथ्स में. सो यू जस्ट डोंट हैव टू फोकस ऑन सिंपल कि हाँ मेरे को तो कोडिंग करनी है तो मैं कोडिंग पे जाऊंगा. यू हैव टू फाइंड अ अल्टरनेटिव प्रोफाइल ऑल्सो. अगर एक में नहीं हुआ तो यू शुड हैव अ अल्टरनेटिव प्रोफाइल कि मेरा इसमें तो हो जाना चाहिए. सो रिसेंटली बहुत ज्यादा बूम था आईआईटी का, जहाँ पे सब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे थे, बट फॉर द पास्ट 2-3 मंथ्स. बट अभी जो रिसेंट लास्ट 2-3 मंथ्स में वी हैव सीन कि आईआईटी जॉब्स कम हो गई है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लोग हैं उसमें और कंपनीज निकाल रही है उनको. तो डोंट फोकस ऑन सिंपल आईआईटी ओनली, जस्ट ट्राई टू फाइंड अ अल्टरनेट ऑप्शन. फॉर आईटी पीपल एनालिस्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. मतलब काइंड ऑफ सिमिलर ओनली, यू डोंट रिक्वायर मच कोडिंग स्किल्स इन एनालिस्ट. एंड इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैन बी, वो भी ट्राई कर सकते हो वो, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारे कॉलेज में कौन सी कंपनी आ रही है. मतलब इफ आई एम सेइंग कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट की प्रेप करो बट तुम्हारे कॉलेज में प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कंपनी नहीं आती है, तो इट्स नॉट यूजफुल फॉर यू. यू हैव टू प्रिपेयर अपॉन डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज एंड द कंपनीज जो प्लेसमेंट्स के लिए आती है. Thank you, Santosh, for answering that. Next up, we have question from Aditya, and he is asking, is academic percentage matters in placement? Yes, it does. So अब कोई भी ये बोलेगा कि यार कॉलेज आ गए मजे करो, ऐसा होता है, बट
पढ़ना सबको उधर भी है, आईआईटी में भी उतनी पढ़ाई होती है जितना जेई में करा था. इट जस्ट यू गेट हैबिचुअल कि इतने स्टडी करने का. सो देयर आर कंपनीज हु कीप देयर सीजीपीए कट ऑफ. सीजीपीए इज सबको पता है ग्रेड पॉइंट्स. सो आउट ऑफ 10 की 8 हमारा कट ऑफ है, तो यू कांट अप्लाई अगर तुम्हारी 8 से कम. देयर आर कंपनीज हु कीप इट 7, 8, 9. सो बेसिकली रैंक मैटर नहीं कर रही यहाँ पे, हमारा सीजीपीए मैटर कर रहा है कि व्हाट वाज योर सीजीपीए इन आईआईटी, और वो कंपनी उस पर जज करेगी फर्स्ट फिल्टर आउट करने के लिए. हाँ, देयर आर कंपनीज जो सीजीपीए को ऐसे यूज मतलब एज अ फिल्टरिंग प्रोसेस में यूज नहीं करती है, बट इवेंचुअली इट रिफ्लेक्ट कि यू वर डेडिकेटेड टूवर्ड योर ब्रांच, कि यू हैव अ गुड सीजीपीए, तो यू आर डेडिकेटेड टू योर ब्रांच, तुम एटलीस्ट उस पर अपना फोकस कर रहे हो. So CGPA does matter a lot. Santosh, I have a follow-up question on this. What about those students who just perform average after being in IIT? So what about them? Because it is said that the IIT provide 100% placement. We have been reading this news on social media. So what's exactly is it? So मैंने वही बोला ना कि प्लेसमेंट की टेंशन नहीं है. The only tension is when you get placed and in which company you are getting placed. Because when you are working hard from the past 3-4 years, तुम्हारे जेई का भी ऐड करो तो 2 साल और ऐड हो जाते हैं, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है. सो इवेंचुअली एवरीवन वांट टू गेट प्लेस्ड इन डे 1, डे 2, जहाँ पे मेजर कंपनीज आती है, बिग फर्म्स आती है. हाँ, तो बट सब नहीं होते प्लेस उनमें. तो यू हैव टू ऐसे मतलब देयर आर प्लेसमेंट 100% होते हैं, वो टेंशन नहीं है. तो द ओनली थिंग इज कि अब मैं डे 5 को प्लेस हो रहा हूँ मान लो, तो वो 4 दिन का जो प्रेशर होता है, दैट्स अ प्रॉब्लम, कि यू हैव टू हैंडल दोस 4 डे. अगर डे 1 पे प्लेस हो गए तो सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है. यहाँ यही पॉइंट होता है कि जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू हैंडल दैट प्रेशर. सो मैटर वही करता है कि तुम कौन से डे प्लेस हो रहे हो, कौन सी कंपनी में प्लेस हो रहे हो. प्लेसमेंट लग जाती है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है. मतलब चाहे 10th डे को लगेगी, अच्छे पैसा भी मिल सकता है, बट 10th डे तक का प्रेशर होल्ड करना वो बड़ा टास्क होता है. So Santosh, I'll take one more question, and it's related to how to grab off-campus placement. Any idea about this? या So basically after when the placements are over, like दिसंबर में सारा प्रोसेस सारी IITs का कंप्लीट हो जाता है, बाकी कॉलेजेस का आई गेस कंप्लीट हो जाता है. सो फ्रॉम जनवरी और दिसंबर ऑनवर्ड्स यू कैन अप्लाई टू कंपनीज. यू कैन कॉन्टेक्ट देयर एचआर मैनेजर्स, और यू कैन कॉन्टेक्ट एनी सीनियर जो प्रोफाइल में हो ऑलरेडी तुम्हारे कॉलेज का, या फिर कोई ओपनिंग उस कंपनी में आ रखी है फॉर द फ्रेशर्स पार्ट. So you can apply, you can send your resume. तो जैसे if someone send me their resume, तो I can refer them to my company कि I have got this profile. If we have opening, so if I have opening for someone, तो why company क्यों hire नहीं करेगी? So कोई मेरे को अगर resume भेजता है तो I can refer it to my company and they can start the process. तो इसे ऑफ कैंपस बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है. यू आर डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग द कंपनी थ्रू सम पर्सन, एचआर, और डायरेक्ट ओपनिंग्स जो कंपनी में होती है. तो इसे ऑफ, ये 3 तरीके होते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगाने के. I will ask you more questions which people want to ask you, but before that, I'm launching a poll here so that we can understand whether this session is beneficial for you or not, so that we can bring more quality and informative webinars in near future. So I have launched a poll. It has 2 questions. First is this session is helpful or not? You can answer it in a yes or no. And the second question is, would you refer such webinar to your near person? You can just rate it from 1 to 10. 1 is being less likely and 10 is being the most likely. So let's take few more questions, Santosh. Meanwhile, Okay, sure. So minimum and the highest package. I know you have already told us. If you could just repeat it. So ऐसे रेंज डिसाइड करना डिफिकल्ट है, बट यू गेट गुड पैकेज. मतलब आईआईटी से हो तो यू विल गेट अ गुड पैकेज, उसकी टेंशन मत करो. अब इट विल डिपेंड कि तुमने कॉलेज में कितना वर्क किया, कितना हार्ड वर्क किया, कैसे प्रिपेयर करा है, किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस पर सैलरी डिपेंड करेगी. आईआईटीज में अच्छा पैकेज मिलता है, रेंज बहुत बड़ा है, तो ऐसे जज नहीं कर सकते कि 10 लाख से 1 करोड़ है. सो नॉट एवरीवन इज गेटिंग 10 लाख, नॉट एवरीवन इज गेटिंग 1 करोड़. सब लोग उसके बीच में. Okay. And next up is quite an interesting question. Company choose skills or a hardworking person? How someone can show he is hardworking?
सो वो उसकी स्किल से पता चलेगा ना कि इन व्हाट स्किल ही इज, उसका लेवल क्या है स्पेसिफिक स्किल्स में, उसका सीजीपीए क्या है। तो टेक्निकली वही तुम्हारा हार्ड वर्क है स्टडीज के टुवर्ड्स, तुम्हारी स्टडीज कैसे कर रहे हो तुम, तो सीजीपीए रिफ्लेक्ट करेगी। इसके अलावा तुम्हारी नंबर ऑफ स्किल्स यू आर डेवलप्ड, मतलब तुम हार्ड वर्क कर रहे हो ना उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो स्किल्स ही तो तुम्हारा हार्ड वर्क शो करती है। I would वरना request हार्ड वर्किंग, यू कैन से कि यू आर हार्ड वर्किंग विदाउट शोइंग एनीथिंग कि आई कैन वर्क हार्ड, हाउ कैन आई जज यू। And I would request all attendees to please vote so that I can plan another webinar if required on the IIT placement. And your poll actually matters to me a lot. Next up, we have a question. Can you give suggestion how to apply for the internship program? Okay. Start building your resume first, and then start looking for internship opportunities on LinkedIn. Go through multiple companies, उनकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ होता है कि दे आर हायरिंग फॉर इंटर्न्स और नॉट, वहां पे जाओ अप्लाई करो। इसके अलावा कॉन्टेक्ट योर सीनियर्स जो किसी स्टार्टअप में है, तो यू कैन टेक इंटर्नशिप अंडर दैम। उसके अलावा यू कॉन्टेक्ट योर सीनियर्स जो किसी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो आस्क देम कि क्या आपकी कंपनी में इंटर्न है, तो दे विल प्रोवाइड यू ऑल द आंसर्स टू दैट कि हाँ है, यू कैन सेंड योर रेज्यूमे। तो सबसे इजीएस्ट पे होता है लिंक्डइन एंड कॉन्टेक्टिंग योर सीनियर्स। सो दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन गेट इंटर्नशिप। अगर कैंपस में इंटर्न नहीं लगी है तो, अगर कैंपस पे इंटर्नशिप लग जाती है वो तो फिर अलग ही बात है। Santosh, next up, we would like to have an idea on what's the company hiring expectation from IITs and how to do interview preparation. Okay, so the expectation is कि you are ready to solve problem. They don't want कि कोई टास्क दिया जाए तुम ना करो, दे वांट, उनको पता है कि दे कैन टीच यू एवरीथिंग, यू हैव टू बी रेडी टू अडेप्ट दैट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सो फॉर इंटरव्यू पार्ट, द लाइक हर रोल का अलग होता है। फॉर एनालिस्ट आई कैन ब्रीफ यू इजीली। तो एनालिस्ट में देयर आर चांसेस कि सबसे पहले तो दे विल आस्क यू ऑन योर रेज्यूमे व्हाट यू हैव डन, योर इंटर्नशिप उसमें क्या करा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, योर सीजीपीए कम क्यों है ज्यादा, अगर कम क्यों है तो कम रीजन बताओ उसका, एंड व्हाट वर योर पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज इन द कॉलेज। तो वो पूरा इस पे जज करते हैं रेज्यूमे पे। देन दे आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड, अगर कोई कंपनी इज मोर डेडिकेटेड टूवर्ड टेक्निकल पार्ट, तो दे विल आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चंस, जो तुम कोड कर रहे हो उसी के क्वेश्चन पूछेंगे। दे कैन आस्क यू फ्रॉम डीएसए, दे कैन आस्क सम एल्गोस वगैरह, ये सब कुछ पूछते हैं। एंड देन दे विल आस्क सम एचआर क्वेश्चन। उसके बाद सबसे लास्ट होता है एचआर क्वेश्चन, बेसिकली तुम्हारे बारे में पूछते हैं कि हाउ एज पर्सन और एम्प्लॉय तुम उनके लिए बेनिफिशियल रहोगे। तुम्हें सब आता है बट देर आर चांसेस तुम आलसी हो, या फिर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो कंपनीज प्रेफर नहीं करती है चाहे वो बंदा कितना भी अच्छा हो। तो यू हैव टू शो दैट यू कैन सॉल्व देयर एनी, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम फॉर देम। एंड फॉर कंसल्टिंग वहां पे ऐसा होता है कि दे, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर केस। केस होते हैं, एक कोई प्रॉब्लम दिया कि अ कंपनी इज एंटरिंग अ मार्केट, यू हैव टू गिव देम पाथ, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट एंट्री केस। सो ये चीज सारी प्रोफाइल्स के अलग होती है। तो आफ्टर डिसाइडिंग योर प्रोफाइल, यू हैव टू गो प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स। फॉर एसडी मोस्टली डीएसए या फिर एल्गोरिथम और टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुम्हें कोडिंग में सबको आनी चाहिए। अगर तुम वो कोड कर पा रहे हो तो वो कर ही लोगे। और कंसल्टिंग में केस प्रेप अच्छे से आनी चाहिए, गेस्टिमेट सॉल्व करना आना चाहिए। सेम थिंग फॉर एनालिस्ट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में द थिंग्स रिमेन सेम बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंजेस, वहां पे प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो या यही होता है। Santosh, we have received a set of questions for the MSc. If you just want to skip it, we can skip it, but I'll just read out question. Is there any on-campus placement for MSc graduate from IIT? यस And होता है, उतने नहीं होते बट होता है। and are IITs good for masters? Depend, if you are from IIT so you will not prefer doing masters from IIT only, you will try कि बाहर जाए। But if you are from some other college, private, any college, so they will provide you a better opportunity जो तुम्हारे पास थी। I can guarantee that, मतलब I can't guarantee, at least I can assure you कि you will have a better opportunities after doing MTech from IIT। मैंने तो ये देखा है।
and there are people who do masters from different countries also. तो वो भी एक option हमेशा रहता ही है. But if you are from some other college and you want to do MTech from IIT, so काफी opportunities है. You get lot of companies जो कि सिर्फ MTech वालों को लेने के लिए आती है, which are open for MTech only. So you have a lot of opportunities after doing MTech from IIT. And so, Santosh, all the internships which are offered at IITs, are they the paid opportunities, paid internships? Yes, they are. मतलब we don't get unpaid internship. Mostly, almost every internship is paid only. Santosh, one more thing. Utkarsh, he wants to ask you, if anyone is not from IIT, can you please share your view on how we can find job in the field of IIT? Oh, sorry, in the field of IT. So, if you are from any other college, so you have to work hard. Compare थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा कंपेयर टू समवन जो ऑलरेडी अच्छे कॉलेज में है या फिर है. सो अगर तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज आती है तो उनके टेस्ट की प्रेप करो. अगर देर आर ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में कंपनीज आती है, यू कैन गिव टेस्ट, तुम इंटरव्यूज दो एंड यू कैन गेट सेलेक्टेड फॉर जॉब्स. बट इफ तुम्हारी कॉलेज में कंपनीज नहीं आती है तो वो दैट फिर वही मेथड बचता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स का. Contact your seniors, contact people on LinkedIn for finding jobs. So you have to find companies जहाँ पे तुम्हें apply करना है and फिर start applying in them. अब बाकी तो on campus तो I guess almost सब colleges में companies आती है hire करने के लिए. And next up, we have again question related to the recruitment process. If you could just add a different angle to it, maybe more information. So basically, this is one of the toughest part of your college. These 4-5 months, you have to be mentally prepared, even physically you have to be prepared because the test can be on any time. हाँ मेरे 11 बजे 12 बजे रात को 1 बजे भी टेस्ट हुए हैं. It depends उनका हमेशा क्या slot मिलता है. So don't just start preparing अभी कि last sem में prep कर लेंगे. You have to prepare थोड़ा पहले, at least एक sem पहले से you have to figure out कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना है, मेरे को कौन से प्रोफाइल में अप्लाई करना है. So start preparing for the placement at least 4-5 महीने पहले से. So it will be very easy for you to get placed because you have upper hand on other people जो late start कर रहे हैं. संतोष, नेक्स्ट अप एक मतलब ये मिथ है और क्या है, ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि 1 करोड़ प्लस का जो सैलरी पैकेज IITians को मिल रहा है एंड इट्स क्वाइट अ हाइप इन सोशल मीडिया, सो उसमें CTC और इनहैंस सैलरी में काफी डिफरेंस है या कोई हिडन वेरिएबल है वहां पर, मतलब कैसा है वो? So basically अगर तुम्हारा करोड़ प्लस पैकेज है वो बाहर किसी कंट्री में एक दो चीज होती है, इंटरनेशनल ऑफर्स और डोमेस्टिक ऑफर्स. अगर इंटरनेशनल ऑफर्स है तो इवेंचुअली वो उतना वहाँ उस कंट्री के एक्सपेंस में निकल जाता है और वो बहुत ज्यादा नहीं होता. मतलब चाहे वो 1 करोड़ क्यों ना हो, बट व्हेन यू आर गोइंग इन डू जॉब इन UK तो वहाँ पे एक्सपेंस उतना ही होता है, सब कुछ कॉस्ट ऑफ लिविंग उतनी होती है. सो बट इफ यू आर गेटिंग अ डोमेस्टिक ऑफर ऑफ 1 करोड़ तो इट इज वेरी गुड, इट इज द बेस्ट ऑफर यू कैन गेट फ्रॉम एनी IIT. और व्हेन इट अगर हम कंपेयर करें उनका CTC और उसमें, तो CTC भी काफी ज्यादा होता है. इट लाइक 70% तो CTC होता है उनका. आई कांट गिव यू एग्जैक्ट फिगर्स ऐसे तो बिकॉज इट इज समथिंग which is very not confidential but like not ethical to tell everyone because when you apply तभी तुम्हें पता चलना चाहिए उसके बारे में. और no one will tell you कि उनका CTC कितना है, बेस कितना है. बट if 70% एटलीस्ट 70 से 80% उनका बेस सैलरी होती है. इफ इवन इफ अ पर्सन इज गेटिंग 1 करोड़ तो 65 to 70% आप मान सकते हो कि उनका बेस सैलरी होता है. उसके अलावा बोनस होता है. दैट कैन बी 3 टाइप्स ऑफ बोनस: ज्वाइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस और ईयर एंड बोनस. तो वो इवेंचुअली तुम्हें मिलता है साथ में ही है, तो वो काउंट हो जाता है CTC में. तो डोमेस्टिक 1 करोड़ पैकेज इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट, बट इट इज वन ऑफ द टफेस्ट टू गेट ऑल्सो. वो कंट्रोल होता है और वो मोस्टली HFTs प्रोवाइड करती है अपना पैसा. Santosh, next up we have a question. What to do to get a job in a company?
So rather just asking this a straight question, I would ask you, when we just apply for a particular post, हम काफी सारी companies जो हैं जिस post के लिए हम apply कर रहे हैं उसके बारे में research करते हैं, कुछ study करते हैं, which is expected for a candidate to answer. तो आपने किस तरह से research किया and what according to you could be an important point to consider before sitting for any interview? So मान लो you get shortlist for a company and तुमने अप्लाई किया XYZ कंपनी में एंड तुम्हारी शॉर्टलिस्ट आ गई आफ्टर क्लियरिंग द टेस्ट. सो ये सब हो गया. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एंड कि वो कंपनी करती क्या है. एटलीस्ट उसके पास उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आई एम सिटिंग फॉर XYZ कंपनी एंड आई एम नॉट अवेयर कि वो कंपनी कर क्या रही है. उनको पता ही नहीं है. यू हैव टू गूगल इट, यू हैव टू आस्क पीपल, यू हैव टू सर्च अबाउट द कंपनी कि उनका फील्ड क्या है, वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करते हैं, और वो नॉलेज होना चाहिए किस टाइप के क्लाइंट्स होते हैं उनके. एंड उसके अलावा ये बेसिकली दैट विल हेल्प यू शोइंग कि यू हैव इंटरेस्ट इन दैट फील्ड, कि आई हैव इंटरेस्ट इन फार्मास्यूटिकल फील्ड. तो द कंपनी विल बी लाइक, वो जो बंदा होगा वो खुश होगा कि हाँ आई हैव अ पर्सन जिसको IIT से आता है बट इस वाली फील्ड में भी इंटरेस्ट है. तो इफ यू आर सेटिंग फॉर कंपनी, गो थ्रू देयर प्रोफाइल, वो करते क्या है, तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब लिखा हुआ होता है GD के अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर. एंड उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो एंड खुद फिर वो HR क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करो कि वो कंपनी अगर एक कंसल्टिंग फर्म है तो वैसे HR क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे कि कैन यू मैनेज दिस ऑल स्टफ, यू आर हार्ड वर्किंग, क्योंकि कंसल्टिंग में बहुत टाइम देना पड़ता है आपको. तो वो सब आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है. So Santosh, next up we have a question again. So it's from Aditya. How to become best engineer from a local BTech college? Please advise, because many people are doing BTech nowadays. Start working from day one only and try to develop skills which are required for a company rather than doing some unnecessary things. So mostly I have seen कि लोग SDA के लिए prepare करते हैं. तो if you are preparing for SDA, start preparing from your first year only. Start improving your coding skills. Start improving your developing skills. So that will help you giving upper hand from the students. So if you want to be a better engineer, best engineer तो ऐसा कुछ होता नहीं है. You can be a better engineer because हर किसी से best कोई ना कोई होता है. You can be a better engineer by doing devoting your extra time to these specific things which you are preparing for. If you are preparing for IITs through GATE, so start preparing थोड़ा जल्दी लोगों से. You will have a lot of time, extra time to study about those things. If you want to do a job, start preparing before other people. Start preparing your first year कि हाँ कॉलेज तो मैं कर लूंगा बट आई विल हैव एक्स्ट्रा टाइम, तो मैं अपनी स्किल सीख रहा हूँ. तो डेवलप स्किल्स. Santosh, this question might excite you because Lakshman wants to ask you how you manage YouTube and IIT at the same time. काफी टफ चीज है ये बताना बिकॉज when you are in a college you get time but you don't want to invest all your time in YouTube. You can't invest, right? You have to go out, you have to chill, you have to get free time for yourself. So the thing which comes here is managing your time. क्लासेस है, मेरी क्लासेस सुबह 8 से 6 बजे तक होती है बट देयर आर, ऐसा नहीं है कि 8 से 6 लगातार हो रही है. 8 से 10, फिर शाम को 4 से 5. तो हमारी क्लासेस को ऐसे डिवाइड होती है. सो जो तुम्हारे पास फ्री टाइम है यू कैन कंप्लीट योर स्टडीज या फिर सेल्फ स्टडी जो भी करनी है तुम्हें फॉर स्पेसिफिक क्विज टेस्ट एग्जाम उस टाइम में करो. एंड फॉर यूट्यूब आई यूज टू गिव माई वीकेंड्स. मैं अपना काम सारा वीकेंड्स पे करता था. अगर मैं दिन में शूट भी कर रहा हूँ वीकडेज पे जब फ्री हो आफ्टर क्लासेस वगैरह, तो मैं एडिट सारा वीकेंड्स पे करता था. तो सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती थी तो आई यूज टू वर्क ऑन दोज डे, फोकसिंग मोर ऑन माई कंटेंट. और असाइनमेंट्स भी होते हैं वीकेंड पे, ऐसा नहीं है तुम बिल्कुल फ्री होता है. तो मैनेज करना पड़ता है. यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक अमाउंट टू अदर थिंग्स. सबको डिवाइड करना पड़ेगा. तो वही टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काम आती है यहाँ पे. Okay, Santosh. Next up, Minakshi wants to ask you, placement for which branch of IIT would be booming in the next decade? प्लेसमेंट फॉर ब्रांच तो कहना डिफिकल्ट है बिकॉज एवरी ब्रांच कैन सिट फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी. अगर तुम कुछ कंपनीज होती है जो सिर्फ एज सॉरी हाँ
कंप्यूटर साइंस, एमएनसी और इलेक्ट्रिकल को प्रेफर करती है। उसके अलावा मोस्टली कंपनी सबके लिए ओपन होती है। यू कांट से कि कौन सी ब्रांच बूम करेगी, यू कैन से कि कौन सी फील्ड बूम कर सकती है। कि टेक टेक में तो अभी पॉज है, अभी तो आई हैव सीन कि बहुत कम कंपनीज आ रही है। देयर आर चांसेस कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट और एनालिस्ट वाली जॉब्स ज्यादा आएंगी कंपेयर टू टेक, बट द नंबर ऑफ टेक कंपनीज बहुत सारी है। बट अभी जो सिचुएशन देखे तो मुझे ये लगता है कि टेक विल बी ऑन अ पॉज फॉर फ्यू मंथ्स एटलीस्ट, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स यहाँ पे ज्यादा सीखने को मिलेगा। यूआई यूएक्स, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन यूआई यूएक्स, जो कि आईआईटीज में नहीं था, कभी भी पहले नहीं था, अभी लोगों ने स्टार्ट करा है, कॉलेज पे यूआई यूएक्स करना सीख गए, तो पीपल आर इम्प्रूविंग देयर स्किल्स इन यूआई यूएक्स। तो ये काफी अलग रहता है लोगों से, एंड देयर आर चांसेस कि ये थोड़ा ज्यादा हो इन कंपेयर टू दूसरे अपॉर्चुनिटीज। तो ब्रांच से जज करना डिफिकल्ट है, बट प्रोफाइल वाइज कह सकते हो कि कौन सी प्रोफाइल आगे चले वाली है। So I want to ask you more questions because people are interested to know more. Next up, we have a question from Adarsh. What is the highest and average salary package of ECE branch? Again, branch specific. Okay, a person from EC can sit for HFTs. तो उसका आई हैव अ फ्रेंड जो EC से है, एंड हमारे यहाँ पे EE बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड ही गॉट प्लेस इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFTs, तो आप करोड़ का पैकेज है। देयर आर पीपल फ्रॉम EC जो एसडी के लिए बैठते तो 25-30 lakhs जो उनका रहता है, कंसल्टिंग में भी आते हैं। So on average, if you are from ECA and you have a good portfolio, you have done good in your college, the high chances you will get above average package, 20 to 30 lakhs. But that's all depend upon you. Branch से फर्क नहीं पड़ेगा, घूम फिरा के वही बात रहती है कि you have तुमने क्या करा है। मतलब a person from chemical will get a better job अगर तुमने अपना इलेक्ट्रिकल में कुछ करा ही नहीं है तो वही बात रहती है उधर। Okay. So, still attendees, if you have any questions, feel free to ask Santosh. He is answering all your doubts very well. And with this, I'm taking few more questions. Rizwan has a question. Does MTech has a better placement opportunities than BTech in IITs? Any idea? No. मतलब BTech have a upper hand on MTech, but you will get opportunities in MTech also. But BTech will any day have a upper hand on MTech. If you're doing BTech from IIT, you will have upper hand on compared to BTech, MTech from IIT. Santosh, next up is about a kind of life at IIT, because Lakshman is interested to know about, does IIT student life is boring or they get just lazy while studying daily and everything? That's become their task. ऐसा तो नहीं है, मतलब if you have seen vlogs लोगों के, there are many people who are vlogging their lives from IIT, so you can see कि there are multiple things which are going एक time पे. There can be dance event, music event, the things we used to do in our school, जो cultural होता था सारा वो, which is also that is also followed in IIT. There are multiple clubs, there are multiple sports events जो regular time होते रहते हैं, and you don't get lazy. मतलब अब तुम आलसी हो तो I can't do anything, but there are multiple opportunities you can spend your time. I was in a photography and filmmaking club, so I used to go on photo walks with my juniors or या फिर batchmates. We used to have some workshops, we used to have some competitions, international competitions होते रहते हैं, inter IIT competitions होते हैं। अभी recently inter IIT sport event खत्म हुआ है। So you have a lot of time जो तू खुद को explore कर सकते हो during your whole college period, and ये करना चाहिए। Apart from studies, you have to be involved in this because this will somewhere help you in placements also. Santosh, next up we have a question related to interview. What to do to get selected in interview? Malik has this question, and Hridyan has a question. What traits interviewers looking in a candidate? So how to get selected for an interview? Simple है. There will be a test. Mostly companies test लेती है जो day 3 day 4 तक आती है. You have to clear their test, and you have to have a resume. So basically they will judge you on your resume and your test जो एग्जाम वो लेंगे। तो उन पे डिपेंड दोनों का बन के दे विल डिसाइड कि वो तुम्हें हायर करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तब तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आता है।
तो ये तो होता है इंटरव्यू के सिलेक्ट होने के लिए. इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन क्या था? Read it out, Santosh. जो second था, what traits interviewers look into the candidate? Interviewers look into the candidate. Dedicated towards solving their problems. You can't skip. जैसे हम कॉलेज में असाइनमेंट स्किप कर देते नहीं करा, बट यू कांट स्किप असाइनमेंट इन ऑफिस, बेसिकली प्रोजेक्ट्स. यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी वेल मेंटेन्ड, कि ऐसे ही उठ के नहीं आ रहे तुम इंटरव्यू देने. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. यू कांट आंसर एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते उनके सामने. यू हैव टू बी पंचुअल. तो ये सब अपना बेसिक्स जो होते हैं, यू हैव टू बी स्ट्रांग ऑन योर बेसिक्स. Next up, we have question from Jyotira Aditya. How to crack 8-figure salary package from tier 3 colleges? I don't have much information regarding it because I don't know कि वहाँ कैसा रहता है प्लेसमेंट का. So I can't like मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन पे. तो you can contact someone जिसने ये ऑलरेडी करा है from that college. So और there are people will help you. Okay. कोई मना नहीं करता है. Jyoti, let me help you here. If you are a student of any particular college, please write an email to me. I'm writing my personal email ID, and then you can just share your question there and I will just reach out to you. Okay. Next up, we have a question from Vikas. Again, what makes IIT unique from other engineering grads? And yes, if you want to just add more to what you said previously. There are, मतलब already मैं बता चुका हूँ, but what makes IIT different is their network, their culture, and the training which you go through the whole period, because you are doing multiple things at a time. You are not, there are chances कि मैं एक के अलावा 3 क्लब में काम कर रहा हूँ, but I have classes also, I have quiz also. रात को मैं practice कर रहा हूँ, but सुबह मेरी quiz है. तो and your hostel life, the people around you, वो किस तरीके से कर रहे हैं, that ये सब थोड़ा डिफरेंट बनाता है बाकी कॉलेज से आईआईटी को. हाँ, बाकी तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी सब कुछ. तो संतोष वैसे बाकी चीजें बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. सो वेयर यू कैन फाइंड दिस वीडियो? You can find this video on Shiksha's official YouTube channel, and this video will be uploaded there in a day or two, and then you can just go through this video again and check all the information Santosh has shared. So this would be the last question for today's session. How to approach an international package in IIT? So you basically you don't approach that package. अगर कोई कंपनी आई है and they are giving an international offer, you apply for them. सब लोग अप्लाई कर रहे होंगे and it depend. अगर वो कंपनी टेस्ट ले रही है तो you have to do good in that test. अगर वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, एक सीजी पे शॉर्टलिस्ट रख रहे हैं, तो वो उस पे जज करेंगे तुम्हें. So if you are looking for a international offer, तो start preparing mostly for quant role, क्योंकि वो ज्यादातर उसी के लिए आते हैं, या फिर एचएफटीज के लिए प्रिपेयर करो, या फिर एसडी में इतना इंटरनेशनल ऑफर अभी मिलना बंद हो गया, बट हाँ क्वांट रोल में काफी इंटरनेशनल ऑफर्स मिल जाते हैं. So Santosh, with this, it's time for us to wrap up our session for today, but we are not leaving you like this. We want the concluding words from you. For the students who will be sitting for the placement next year, what your tip would be? So अभी for the next year, at least एक साल पूरा है, एक साल नहीं तो you have 8-9 months. So start preparing from January itself, कि start deciding कि for which profile you're going to apply. Start contacting seniors, start solving problems, puzzles probably. अपनी maths improve करो because quant पूछते हैं वो लोग, aptitude पूछते हैं. Start improving your interview skills, कि start writing your answers अभी से, कि what you're going to answer. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो खुद के बारे में लिखना शुरू करो. And if you are sitting for SD, तो start solving coding problems अभी से. There are multiple websites जहाँ पे सारा पुराने क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल है. Start preparing January itself, तो you will have a better understanding कि तुम्हें आगे कैसे जाना है, and तुम्हारा प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा. So don't delay this thing. अगर तुम प्लेसमेंट में बैठना चाहते हो, अभी से शुरू कर दो.
एंड उससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होगी, इजी हो जाएगी. Santosh, I want to ask you one more question. Sure. Did recruiter ask you introduce yourself? Yeah, they did. Like first question was that only, introduce yourself. So Okay. So you have to I'll not prepare for ask you that. to introduce yourself here, of course, but what all pointers you kept in mind that made you to get a job? So when they asked me about myself, like I have to introduce. So I knew the profile was analyst. So for analyst, you have to be good in maths, puzzles, and those things. So while introducing myself, मैंने उनको ये बताया कि I'm good at these things. I have done internship in the similar field. अगर if I was applying for a product management role, तो मैं उन्हें management skills के बारे में बताता अपने introduction में. तो अपने इंट्रोडक्शन में उनको बता दो कि जो वो चाहते हैं वो मैंने ऑलरेडी थोड़ा करा है. तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर बताओ कि तुमने अपार्ट फ्रॉम अकेड्स क्या करा है, एंड व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. ये 4 साइड से कंपाइल करके इंट्रोडक्शन बनता है. इट कैन बी ऑफ 1 मिनट, बट हाँ थोड़ा शॉर्ट बट प्रिसाइज होना चाहिए वो. And that will certainly help all of us to crack several interviews. And thank you so much, Santosh, for conducting such a wonderful session and answering all our doubts. Thank you, Shilpa, for hosting me. Thank you so much. And thank you to all the people who have attended this session. I hope this session is beneficial for you. And till then, take care and keep dreaming high. And with this, I am Shilpa signing off. Thank you so much, all of you. Thank you, everyone.